My dear students, good morning to you. As usual, as I always mention, my grammar series is running and I'm making all the videos of the grammar to train you in the grammar part. And once you learn the whole grammar of English language, then बिंदास अंग्रेजी बोलोगे। ये मेरा चैलेंज है, लिख लो। तो अगर बिंदास बोलना है तो पूरी ग्रामर की स्टडी करो। समझ आई? लाफ्टर शो देखते हो ना, बिंदास बोलते हैं सारे, तो वैसे बिंदास बोला करो। तो आगे बढ़ता हूं मैं और तुमको भी आगे बढ़ा रहा हूं। Today the topic is direct and indirect speech. 5 videos I have already sent. That is until the lesson number 5, and today we are on lesson number 6 of the direct and indirect speech, or reported speech you can call it, or narration. So these are exclamatory sentences. Exclamatory sentences, under the first topic I taught you, under the title, what is a sentence? So you studied there 4 types of sentences: assertive, interrogative, exclamatory, and imperative sentences. So this is the narration of the exclamatory sentences, where sign of exclamation is given. Sign of exclamation समझते हो ना? हमारे हिंदी के स्कूलों में पढ़ाया जाता है डंडा लगा के नीचे बिंदी, because when you miss bindi in Hindi, it changes the sense. तो माथे पे बिंदी आती है ना, सिमिलरली यहां आपने एक्सक्लेमेशन में एक वर्टिकल लाइन लगा के नीचे बिंदी लगानी है. That is called sign of exclamation. Now define it. What is exclamatory sentences? The exclamatory sentences show something very surprising, something very amazing. That's what exclamation. तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, as usual the rule is all punctuation marks are to be removed, and the indirect speech sentence will be converted into assertive sentence or full stop sentence. Right? So what are the rules of the exclamatory sentences? To transform the direct speech into indirect speech. So in the question, this will be given. Ha, ha, hurrah. तो जब आप indirect बनाएंगे, तो you will write down exclaimed with joy in place of said or said to. Then, ha, alas, this is a sign of sorrow. So we shall write in place of said or said to, exclaimed with sorrow. Then, oh, good God. तो आप लगाएंगे said और said to को हटाकर exclaimed with surprise. Then, fu, shut. जब हम किसी को कहते हैं ना, अरे, चलो
बादशाह, तो आप said or said to की जगह लगाएंगे exclaimed with contempt, then bravo, hard. तो यहां पर you will put applauded. उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया होगा ऑब्जेक्ट में, that is after the reporting verb, that you have to write, then write saying. I will make a sentence, don't wait. Then exclaim with regret when, जब sorry दिया होगा, so then you have to use exclaim with regret. कुछ sentences में adjective दिया होगा, तो वहां आपने very लगाना है indirect speech में, और कुछ में noun दिया होगा तो वहां आपने great लगाना। Rest all the allied rules जो मेरी lesson number 1, 2, 3 में थे, how to transform the direct into indirect speech, all the rules, they all will be applicable equally in every category of the sentence of the narration. So that is what the exclamatory sentences with sign of exclamation in the direct speech. I've written here 3 examples I made their indirect speech. The team said, "Hurrah! We have won the match." So what will be the answer? Indirect speech. The team exclaimed with joy. Use conjunction that in place of inverted comma. That as per the rules we, team में change होगा they. Have one, present perfect changes into past perfect. They had won the match. Full stop. So it has become a simple sentence. तो हमने हुरा को exclaim with joy में यूज किया, and that conjunction is to be used in place of inverted comma. That is mentioned in my handout. जब आप शीट देखेंगे वीडियो के बाद तो you will get the all rules. Then he said, "Sorry, I cannot lend you my scooter." He exclaimed with regret that I को बदलेंगे subject of the reporting verb he cannot changes into could not lend. You को बदलेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी लगा दो, not cannot could not lend me. My को बदलोगे he में, his scooter. So this is your indirect speech. Then she said to her servant, "How silly and careless you are." यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जहां भी नाउन या एडजेक्टिव दिया होगा वहां पर आपने वेरी या ग्रेट लगाना है रेस्पेक्टिवली. तो यहां पर हमारे पास सिली है और केयरलेस है, बोथ आर एडजेक्टिव. सो व्हाट यू हैव टू राइट? शी एक्सक्लेम्ड दैट. तो यहां का जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो अंदर जाकर एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज़ दैट इज ऑलवेज इन थर्ड पर्सन. शी एक्सक्लेम्ड दैट हर सर्विंग. यहां इजम आर कोई वर्ब नहीं दे रखी, लास्ट में दे रखी है आर. इजम आर चेंजेस इनटू वाज वर्ब, तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा ताकि हमारा फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस बन जाए. हर सर्विंग वाज, वेरी हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एडजेक्टिव दिए हुए हैं. हर सर्वेंट वाज वेरी सिली एंड केयरलेस.
क्लास है ग्रामर की, आप सीखते जाइए, कीप ऑन लर्निंग देम। फिर देखिए आप कैसे इंग्लिश में परफेक्ट होते हैं। You will acquire the total perfection in English language when the whole grammar is working in your mind. That is what the essential tool. Some people say, "अरे grammar क्या है? Grammar के बिना अंग्रेजी बोलो." No, such kind of people, where the grammar is not working in their mind, they will have lot of fillers. Their frequency will be halted. Their frequency cannot go so sharply. So, grammar is very necessary to become a fast speaker, to become an intelligent writer, and to show your great confidence in English language. Therefore, I always insist on grammar so that you will have a complete knowledge of the language. In every language, you learn Spanish, you learn Russian, all the teachers stress that the grammar is the most essential part. So, I am teaching you the entire grammar under my English grammar series. So keep on learning. So that is what the way. अब आपने अगर अंग्रेजी को सही ढंग से सीखना है, एरोप्लेन की तरह बोलनी है, that is what the speed of the airplane, as it is required in the modern world. It is a surviving language. It makes you to survive. It is the existing language. It creates your identity. आज की डेट में अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो आपकी पहचान बन चुकी। That you speak very wonderful English. You are very confident. You are very witty and you do the things very quickly. That is what is the modern pattern in the organization. So learn it. I am teaching you. You have not to spend any money. Only you have to watch my videos. इतना टाइम तो निकाल ही लोगे। सोशल मीडिया पे बैठ रहते हो सारा दिन। इसे सीखो ना। जो जहाँ की उल्टी सीधी चीजें देखते रहते हो सोशल मीडिया पे बैठ के। ना जिनका कोई मीनिंग है ना कुछ है। मैं सारा दिन पढ़ाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, आप तक भेजता हूँ। मेरा भी मन करता है मैं भी सोशल मीडिया देख लिया करूँ कभी कभी, बट नहीं, जिसका मिशन जो होता है वो उसी मिशन में अपने आप को बिजी रखता है। सो माय मिशन इज दिस। तो छोड़ो सोशल मीडिया में, अपना कैरियर बनाओ, लैंग्वेज सीखो, बहुत काम आएगी। अबे बात समझ में आती है? आती होगी डेफिनेटली, राइट? सो माय दिस रिपोर्टेड स्पीच इज कंप्लीट। कहीं डाउट आए? As soon as the video will get over, and next sheet से रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बने हुए हैं, उनका सॉल्यूशन है, उनको पढ़िए, रूल से मैच कीजिए, अपनी खोपड़ी में मिटाइए और फिर खोपड़ी का प्रयोग कीजिए। राइट? Here I am. I'm HK Bhattacharya. Subscribe my channel and share it and like it, as you will share to many number of students. It will be quite an act of kindness from your side. Let everyone learn the grammar series. Thank you very much. Bye bye.